हीर आखिया सुते सो सब मुठे नींदर मारिया राजिया राणिया नू Let me now come a little bit to what happened to the subcontinent. Under a modern government, and the British government, brought in modernity, the penetration of the state is much more than in a medieval government. In a medieval government, etc., the state basically takes taxes. The king is a man who takes taxes and basically wants a good life. His governors and nawabs and rajas, etc., are also people who basically take taxes, take away people's daughters, and that's it. They're not too much concerned. They're not powerful in that way. They might have armies, etc., which they feed well, but they don't penetrate that much inside society. In a modern state, the functions are such that you penetrate much more deeply. And so there are records. In my book, Language and Politics in Pakistan, I actually quoted those records, and it was said, we are very few. This is how it begins. By the way, there were no more than over 2,000 ICS officers ever, right? English ICS officers ever. Okay, right? So, how do we govern India? So they said it is far too expensive to bring English people to do everything. We can't bring clerks from England. We've got to have universities here. We've got to have colleges here. This was one aspect. The other one was that actually we are doing them a favor. Because we have gone up the scale of civilization, so this is a white man's burden. It is necessary for us also to do it. So both the moral aspect was there also, the political aspect was there, the economic aspect was there. All three aspects were there. A second letter talks about the removal of Persian. Persian is a symbol of Muslim rule. We have to remove Persian. Further, Persian is not understood by anyone. I mean, very few munshis and highest class people understand Persian, so what? They can also learn English. What shall be put in its place? Obviously, English. Earlier, British officers used to write letters in Persian. But later on they said, no, we've got to remove this. Instead, we are going to use English. But other people said, not just English. Then we can't really actually educate people only in English. Besides, the pyramid at the top has to be small. So English for certain elite schools, 𝐻𝐿 college kind of schools, European schools, universities, that's higher education, very few people will go there. But we need the languages, not of the people, no. Languages which we consider standard. And there's a name for it, the vernacular language. It appears as if vernacular language means the language of the people. It doesn't mean the language. It means a standardized form of a language which the British government approved of. In Bengal, this was Bengali. Not all kinds of Bengali, but a special Bengali spoken by the Calcutta middle class. Educated middle class in Calcutta, that Bengali. Other forms of Bengali were there, but this was the form which would get you jobs. In UP area, this was called Hindustani. This was the language of the courts and the Kachari and Thana, etc. Hindustani, it was the name. It was to be written in two scripts: the Urdu script, Arabic script, and the Hindi script.
Devanagari script. But there was a problem. The problem was Thana Kachari and lower jobs, not higher jobs, they were all in Hindustani, mostly written in the Perso-Arabic script. But the languages which were taught in the school, the medium of instruction in the lower school up to class 8 and in some places up to class 6 was Hindustani, all right, but Hindi was, Devanagari Hindi was also taught. So there were many more, now Muslims were 14%, so there were many more people who knew they had learned Hindi at school, but jobs were not in Hindi. They obviously demanded two things. One, decolonization of Muslim culture, and the other one was they demanded jobs. Sir Anthony MacDonald, Lieutenant Governor of UP, has written letters which I saw in Oxford University, and he says that for 3 years the Hindus petitioned me, and they said that they wanted only, their Hindi to be recognized, Devanagari Hindi in the Devanagari script. And I think they are right. So I have only said this, that if government receives a letter in Hindi, then the government will reply to that letter in Hindi in the Devanagari script. Muslims are very angry with it. Very angry, julus nikle and all that. Why? You know what it means? Every government office, every school, every Thana Kachari is going to have someone who can write Devanagari script in one clerk. That clerk is going to fall in. So you could need 2 clerks. Their handwriting is going to be terrible. So you need an overseer. You need a head clerk. 3 jobs gone. Budget will not be increased. So the Urdu writing clerks, they call it Hindustani, but the Urdu writing clerks, there will be less in number. The Urdu writing clerks are either Muslims or the 𝐶𝐬𝐻 class. Now the 𝐶𝐬𝐻 class is connected culturally and invested culturally and emotionally in the revival of the Devanagari Hindi. Even if Nehru's mother spoke Urdu, as Nehru said, and Nehru himself could not write it, but so what? After all, decolonization of the mind was also taking place. So they didn't object either, although they were losing jobs. So so that is why the Muslims knew that this is the end of our dominance in jobs. In UP, by the way, according to their numbers, Muslims were dominant in jobs. This comes as a surprise to many people. You can see I have quoted over there in language and politics in Pakistan. In Punjab, there was a big problem. The British had been given a very hard fight by the Sikhs. The Punjab had not been won easily. A very hard fight had occurred here. In UP, on the other hand, the victory was much easier. The reason for that was 1803 Lord Lake conquered Delhi. And who welcomed it? Shah Waliullah's sons. For a simple reason. They welcomed it because this was not the Marathas coming and taking Chauth and going away. They welcomed it because you couldn't venture outside the Red Fort of Delhi, you could be kidnapped. The Rohingyas would come. They would make the daughters of the Mughal, princesses dance naked. That's why they welcomed it. They said, it's good. At least there will be a stable government. In the Punjab, this was not the reason. In the Punjab, there was a war. And finally, the British won that war, but they knew that, we are dealing with people who might put up the same resistance again. In UP, they are divided between Hindu, Muslim a lot. But here, this seems to be a big problem. The Sikhs also employ Muslim soldiers and Muslim generals, and all this is going to be a big problem. So most of the British officers, that was one reason. The other reason was that they brought British officers and munshis, etc. from India. East India Company chose to rule in Bengal, etc., using local people.
But when they conquered the Punjab, they brought even the munshis from UP. There were two reasons for it. One was, why give them jobs yet? They resisted us. The second reason was, they don't write Hindustani. Why bother? And the third reason was that in UP, there was a big demand, give us more jobs. Jobs were ending. Give us more jobs. They couldn't open more thanas and kacharis, but Punjab was open for the thana kachari. So they brought even the munshis from there. Even the PNs, they brought them from there because of Safarish. Somebody said, all right, you're going there, to be hamare bache ko bhi de. So that sort of thing. So the Punjab was, only in 1857, the whole, the fortune of Punjab was reversed. Strange thing is that very often Pakistani historians and Indian historians, they say that Punjab sided, Punjab is the frontier, they sided with the British, they had no nationalistic feeling. This is untrue. Nationalism was not there. It didn't exist. The British brought later something which is called Indian nationalism. Otherwise the Punjab was different, Hindustan was different. But the Hindustanis had come and conquered here. So why not get up and conquer there? There were two realities in both the frontier as well as the Punjab. One was Namak Halali and the other one was Bhaibandi. Bhaibandi, take care of your brother. Ethnic bonds, Bhaibandi bonds and Namak Halali. Namak Halali, the Punjabis and the Pathans both were doing because the Hebrew people who were saying, come into the army, we are going to give you namak and you go and fight with us. Namak and halal. That's what had happened in India all the time. Before this, the same thing was happening. Bhaibandi they were also doing because they are going with their own tribal people. So they did not betray. It's just that people nowadays use the different concept of nationalism to apply to 1857. They shouldn't do it. The concept is wrong. So after that, what happened was that the language by that time had been chosen, which was Urdu, not Punjabi. But at that time, in military, this time the Hindustanis were thrown out, and those Bengalis, everybody was thrown out, and obviously they were taken, the Punjabis were taken. So while pensions and army funds, etc., flowed into the Punjab, and Ghodapal, Murabba, etc., they were there, they helped the upper classes of the Punjab, which were created by the British, etc. They helped the feudal classes of the Punjab, which were also created by something called permanent settlement, and they also brought in prosperity of that kind to the service class, but the language did not prosper. Instead of that, Punjab actually became the fort of Urdu. And here the feeling in the brain is that for polite conversation, for formal conversation, Urdu is better. And for higher education, etc., and for even more, let's say, upper type of conversation, English is better. That's called linguistic hierarchy and the linguistic ideology which we got into our brains. As I was saying, अच्छा और बुरा समझना, what is good and what is bad, etc., what is beautiful and what is not. This is in our brains. We humans discriminate. So linguistic discrimination is based upon the ideology which we have of language, and that, unfortunately, is that somehow there is a standard language which is higher than this. ये कुछ कमी है. So the whole idea of language and dialect actually goes against the languages of the people. You need maybe, because these days there's education and there is, the internet and all that, so you do need a standardized form of one variety of a language, whichever it is. But there's no need to teach that it is the better form of language. There's no need to teach that this is the language and other things are not the language. All sounds coming out of the human mouth, if they convey meaning or attitude or emotion, are language. सीधी सी बात. सवाल
much. Now we are moving to our third part of the session, and that is, of course, the open house discussion and question answer session. Animal languages ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे। अच्छा, इस सवाल का मुझे आप उर्दू में दें, दूसरे का मैं फिर पंजाबी में। अच्छा, देखिए बात यह है कि एक चीज़ जो देखी गई उसके अंदर है, जो ये काम हो रहा है उसके अंदर ये है कि एक चीज़ होती है क्रिएटिविटी, यानी आपके पास चंद अल्फाज हैं, आप उससे नए मायने पैदा करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं अभी तक जो उसके ऊपर रिसर्च वो कहती है वो फिक्स्ड होते हैं, यानी हनी बीज जो हैं वो एक डांस करती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम उनका डांस है, तो वो 3-4 किस्म के डांस हैं, इनको आइसोलेट कर लिया गया है कि उसका मतलब ये है कि इतने दूर वो हैं, फलाने फूल हैं, तो वहाँ जाके उड़ो एंड यू कैन गेट द हनी फ्रॉम देयर, राइट, यू कैन गेट द शुगर फ्रॉम देयर, तो थिंग्स आर फिक्स्ड। इसी तरह ये जो आवाज़ आती है शाम को वुल्फ्स की और उसके अलावा और उसके आती है आउल्स वगैरह की, वो भी 2-3 क्राइज हैं, एक मेटिंग क्राई है, एक और चीज़ है, एक डेंजर का बताते हैं वगैरह वगैरह, तो वो फिक्स है। ह्यूमन लैंग्वेजेस उनका फर्क ये है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर क्रिएटिविटी बहुत कुछ हो सकती है, बहुत कुछ कह सकते हैं, और उनके अंदर वो नहीं, अभी तक तो यही है। अच्छा, एनिमल्स के साथ काम करने का कि यानी उनको वो चीज़ें तो डॉल्फिन तो बहुत ज़्यादा है इंटेलिजेंट, उसको तो बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया, तो दूसरे एनिमल भी आपकी बात समझ लेते हैं, लेकिन बात यह है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन भी समझते हैं, वो अपने बात कम्युनिकेट डेंजर वगैरह तक तो वो भी कर लेते हैं, खुशी भी कर लेते हैं। उसके ऊपर डॉर्विन की भी एक किताब है ना, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स, तो ये तो इतने ज़माने से है, लेकिन यानी जिसको हम ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं कि आप एक शेर भी उसके अंदर तो ये जानवरों के साथ अभी तक ये नहीं। अच्छा, दूसरी जी गल है, जैसे पंजाबी जिसका जवाब है, वैसे तो सूफी साहब वो किताब जवाब तो हो गया, लेकिन फिर भी सर्बो क्रोएशियन का नाम सुने ना, सर्बो क्रोएशियन एक बोली होती सी, जुबान होती सी, ओके वट एवर यू कॉल। अच्छा ठीक है, हुन 3 में वंड हो गई, सर्बियन, क्रोएशियन एंड वन अदर, Bosnia, 3, on the basis of a war, on the basis of whether you're Christian or a Muslim, etc. So there are political reasons for calling a language either a separate language or the same language. अच्छा, जी वो गल की है बिल्कुल ठीक की है कि सराकी उत्थे जरा इस अपनी जुबान नूं उन्हें वखरा किया है, और इस वास्ते किया है कि उत्थे एक सिंबल चाहिए सी, अलामत चाहिए सी, वो अलामत जो उन्होंने सराकी होगी, वैसे सराकी तो नाम ही नहीं सी, या तो मुल्तानी सी या रियासती सी, हाँ वगैरह वगैरह। सराकी के नाम बाद 1974 एक्चुअली उन्हें एक इकट्ठा होया तो उससे सराकी के नाम तजवीज़ किया, नहीं तो सराकी ते अपर सिंध की ज़ुबान, सिंध तो है, हाँ वो तो सिंध है, तो नेम्स आर, दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म। सराकी वाज कंस्ट्रक्टेड बिफोर आवर वेरी आईज, लेकिन हुण जेड़ा हो गई है ते तुसी डिनाई ना करो, मतलब तुसी जेड़ा मर्जी करो। मैं as a writer मैं डिनाई नहीं करूँ, ठीक है तुसी कह रहे थे, हाँ ये है कि थोड़े ज़्यादातर जड़े अल्फाज ने they are intelligible to Punjabis normally, linguistically speaking, when the intelligibility is 80% or so, we call it the same language. उन्होंने ज़ुबान उस्मान पश्तो होगी, बाद में उर्दू हो गई, लेकिन आस पास जड़े अवधी बोलते सन, बिल्कुल अवधी बोलते सन, कोई बल्कि मुसलमान भी अवधी बोलते सन, क्योंकि वो मतलब पिंडा च रहते सन ते अवधी बोलते सन। अच्छा उत्थे अगे जाए तो होड़ बोली सी, जेड़े मिडिल क्लास या
या एजुकेटेड या अपर क्लासेस या तबका सी पढ़ा लिखा उन्हें जुबान होती सी both Hindu and Muslim and that's why they call themselves ashraf ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਹੀਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ power politics. ਹਾਂ but they were in power ਠੀਕ ਹੈ they were in power whether it was Hindu middle class or Muslim middle class उन दोनों के कोल नौकरियां सन they were Farsi was the highest language of course लेकिन फारसी के बाद Urdu was the polished language of the cities Urdu was not the language of the villages or ठीक है अच्छा सर मेरा ये सवाल है ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੋਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ state ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ नहीं linguistically नहीं state कहती जुबान है state नहीं कहती उसे कह दे कोई ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਥਿਤਾ ਰੂਲ ਮੋਡਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ linguistic rule है ਉਹ ਕੀ ਹੈ linguistic एक तो rule है you know lexical similarity ठीक है अगर दूसरा रूल है स्टैंडर्डाइजेशन ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ देखो जी ਸਮਝਦੇ ਬੈਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ अच्छा एक बंदा मुल्तान तो होवे ਹਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ then I'll say कि जी भाई this is 85% of the similarity of words So, this must be the same language ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ मैं सिर्फ linguistically कर रहा हूं ਠੀਕ ਹੈ then I'll say कि अच्छा but the intonation is different Mhm. ਜਿਹੜੇ last intonation is different maybe it is not ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ linguistically ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੈਕਸੀਕਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ लेक्सिकन ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਲੇਕਿਨ linguistically ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ linguistics ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਕਾਲ ਇਟ ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਾਲ ਠੀਕ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਾਕੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ basically you were saying कि discourse देखें वो ये है कि who has power over discourse No, I'm not saying who has power over discourse. I'm saying if the discourse has changed. Discourse has not changed, nah? That's the point. Basically the discourse is that the powerful whoever is powerful, culturally powerful and otherwise powerful, economically powerful, they create discourse. Discourse कैसे बनाएंगे? But then we are also following the same Of course. thing. देखें ऐसा है कि आपने टीवी आपके हाथ में है, Yeah. आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपके हाथ में फिल्म है, आपके हाथ में ड्रामा है, ठीक है? इसके अंदर तो आप डिस्कोर्स बना रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक्स है, यही तो आप बना रहे हैं कि औरत को शर्म हो या पुतली होना चाहिए, यही आप डिस्कोर्स बना रहे हैं। आपने ये डिस्कोर्स बनाया कि जो यानी इंटरसेक्स है, ख्वाजा सराय है, वो किसी सूरत में उसमें कोई डिफेक्ट है, यही आपने डिस्कोर्स बना लिया। तो ये डिस्कोर्स बनाना जो है ये जिसके हाथ में डिस्कोर्स बनाना होता है, whoever creates the discourse, the whole discourse has to be dispersed, and that means you need money to do it, and you need power to do it. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, I have the monopoly of the discourse ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ मतलब you are declared a kafir, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ और डिस्कोर्स कर ही नहीं सकते, you be declared a kafir, anti-national discourse की। What was the discourse of the army?
The discourse of the army was India is the eternal enemy. उन्होंने हम पे हमला किया है. This book says कि नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो है जो पाकिस्तान को इन जंगों से बचाए. हम एंटी नेशनल नहीं हैं. हम इस मुल्क के अवाम के केयर कर रहे हैं. हम कहते हैं फजूल की जंगें इन पर मुसल्लत ना की जाए, इनसे टैक्स फजूल की जंग पर ना की जाए. डिफेंसिव वॉर को तो हम नहीं कह रहे कि गलत है. हम तो ये कह रहे हैं कि ऑफेंसिव वॉर गलत है. बांग्लादेश में आपने ऑफेंसिव वॉर उनके खिलाफ की थी, तो वो हम उसको गलत कह रहे हैं. कश्मीर में अगर इंडिया वही काम करे तो हम उसको गलत कह रहे हैं. That's it. So there was a discourse. Discourse has to be challenged. और डिस्कोर्स को चैलेंज करने के लिए भी पावर चाहिए. ऐसे डिस्कोर्स पे ज्यादा नहीं. तो आप लोग जो यहाँ कर रहे हैं, you know, if you are trying to challenge the discourse of the superiority of English and Urdu in the Punjab, here you are challenging a dominant discourse, and that dominant discourse is above all taught by the Punjabi middle class and upper class itself. उनका डिस्कोर्स जहनों में होता है, वो उनके अपने, वरना इतने लोग जुबान पे कोई कुछ नहीं कर सकता अगर अपने उनके जहन में ना हो. Right? You see, I taught myself Punjabi as a rebellion against my own family. चलो इतनी अच्छी नहीं भी आती, लेकिन मैंने एक रिबेलियन के तौर पे मैंने दो काम किए. एक तो अपने नाम के साथ से खान हटा दिया, तो मैं नहीं करता कि वो कोई चीफ्स और ये वो चीफडम को और इन चीज़ों. वो यूपी में ज़्यादा खान पे जोर हुआ करता था. उसकी वजह ये थी माइनॉरिटी थी, तो माइनॉरिटीज बहुत इस मामले में सेंसिटिव होती हैं. उनको तो 1400 के सालों को रूल भी करना होता है, तो माइनॉरिटीज बहुत सेंसिटिव होती हैं. तो वो तो मैंने एक रिबेलियन ये किया, दूसरी ये किया कि मैंने तो पंजाबी सीखी एंड आई डिड. वरना ये कि मेरी जो लैंग्वेज थी स्कूल की वगैरह वो तो इंग्लिश थी, वो तो उर्दू भी नहीं थी. लेकिन ये कि मैं मदर स्पोक उर्दू एंड वो उर्दू भी थी लेकिन साथ में, लेकिन ये कि मुझे ज़्यादातर तो इंग्लिश की वो काम भी किया. और गालिब की भी मैंने शरह लिखी, उर्दू सीखी ना. अच्छा, पंजाबी भी इतनी सीखी कि आम बात कर लेते हूँ, लेक्चर की और बात है. यहाँ बहुत से टेक्निकल अल्फाज होते हैं जो कर नहीं सकता. नहीं, एक दफा मैंने नाम की कोशिश की थी पूरी स्पीच, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैंने ज्यादा करी, आधे बात तो अंग्रेजी के थे, फिर क्या पंजाबी स्पीच हुई. तो मैं अब ये करता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं. वैसे बातचीत में करता हूँ, और वो इसीलिए करता हूँ कि विद प्राइड आई लिव इन द पंजाब. Why shouldn't I learn the language? Why shouldn't I speak the language? डॉक्टर साहब जो ताकत का मामला है, इनू बाबे नानक ने बड़ा सोहने तो उन्हें जबान नहीं बाकी सारी चीज़ा एक पासे रख के वो कहते हैं कि धर्म राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है. ठीक है ना जी. ये धर्म भी जड़ा है वो भी राज नाल ही चलता है, वरना नहीं चल सकता. ठीक है जी. धर्म तो भी तो डिस्कोर्स. हाँ, कोई डिस्कोर्स. हाँ, बिल्कुल वही गल है. अगली गल मदरसे भी कर सकते हो, स्कूल भी कर सकते हो, रेडियो ते भी कर सकते हो, टीवी ते भी कर सकते हो, जो मर्जी कर लो बस. इधर उन्होंने नाल ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ. ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੌਖਾ ਸੀ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਸੀ ਨਾ. ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ it will be a political error to promote this language and this script because we have wrested the Punjab from the Sikhs. अच्छा, तो उथे वास्ते मतलब पेशावर के वास्ते उन्होंने लिखा कि अगर तुसी पश्तो ना लागू करो, ये जड़े पख्तून ने they will look towards Kabul. They should not look towards Kabul, they should look towards Delhi. ये बिल्कुल साफ लिखा है, एक बात साफ लिखा है. ये वो भी गल सी. दूसरी गल जड़ी